हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका नीट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एक बार फिर से। और आज अपन स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का पार्ट 3, जो कि आपको पता ही है फुल एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। एंड एनसीईआरटी का वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिकआउट हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 3, जो कि फाइनल पार्ट है एंड इसका फर्स्ट पॉइंट जहां से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिकआउट हो सकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक enzyme secreted by found in the gastric juice of the infants, okay, and help in the digestion of the milk. Renin is the proteolytic enzyme, okay, of the gastric juice of the infant and help in the digestion of the milk. Then a small amount of the lipase is also secreted by the gastric gland. Small amount of the lipase is also secreted by the gastric gland. Then bile, pancreatic juice and intestinal juice are opens into small intestine. Okay, जो bile in pancreatic juice and intestinal juice होता है, that all are secreted into the small intestine. Then pancreatic juice and bile released through the hepatopancreatic duct. Okay, pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. ये important point है. Okay, then pancreatic juice में क्या क्या रहता है? तो pancreatic juice में ये सब enzymes रहते हैं in inactive form. क्या? All are in inactive forms. क्या क्या है? Pancreatic juice contain trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase, and nucleases. Okay. Pancreatic juice contain trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase, and nucleases. Then enterokinase is secreted by the intestinal mucosa. Okay, ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन करता है. ओके, ट्रिप्सिनोजन क्या है? ट्रिप्सिनोजन इज इन इनएक्टिव फॉर्म. ओके, जो पैंक्रियाटिक जूस से सिक्रेटेड होता है एंड इसी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव करता है, मतलब ट्रिप्सिनोजन को इसका एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन? एंटेरोकाइनेज. और एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, बाइल के रिगार्डिंग कितने पॉइंट्स है जहां से अपना क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है? तो बाइल कंटेन पिगमेंट. पिगमेंट क्या क्या है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ओके, बाइल में पिगमेंट है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एंड बाइल सॉल्ट है, एंड देन कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड. सो बाइल में क्या क्या है? पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड. एंड पिगमेंट, बाइल पिगमेंट क्या क्या है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. नेक्स्ट, बाइल डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम. So bile do not contain any enzymes. ये important point है. Next, bile help in emulsification of the fat and active lipases. So bile help in emulsification of the fat and active lipases. Then intestinal mucosal epithelium have goblet cell. Then secretion of the brass border cell of the mucosa and secretion of the goblet cell make intestinal juice or succus entericus. Okay. Then succus entericus में क्या क्या है? डाइसैकेराइडेज जैसे मोल्टेज, देन डाइपेप्टाइडेज, देन लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट ऑफ द पैनक्रियास क्या करता है? प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एंड प्रोवाइड एन अल्कलाइन पीएच. तो अल्कलाइन पीएच कितना है? 7.8. देन लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी. देन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? First, absorption of some water, mineral, and drugs. Then, secretion of the mucus, which help in adhering of the undigested food particles and lubricating it for the easy passage. Okay. Then, undigested and unabsorbed substances, which are known as feces, enter into the cecum. Okay, through large intestine, and it is guarded by the ileocecal valve. ये important है. Next, hormonal control of the secretion of the digestive juice is carried out by the local hormones, okay, and are produced by the gastric and intestinal mucosa. Next, marasmus. Marasmus किसके केस में होता है? Individual of less than 1 year and due to low protein and high calorie food. Okay, and then kwashiorkor. Kwashiorkor is a individual of greater than 1 year age and when mother milk is replaced by the low calorie and high protein food. क्वाशियरकर कब होता है? When the mother milk is replaced by the low calorie and high protein foods. Then
सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कौन कौन एब्जॉर्ब होता है? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोनोसेकेराइड स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक कैल्शियम, CL-, ओके। देन कैरियर प्रोटीन के थ्रू कौन? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, and then through the active transport, glucose, amino acids, and sodium are absorbed into the blood by this process. Okay. Then fatty acid and glycerol being insoluble do not absorb into the blood. ये important point है. Fatty acid and glycerol being insoluble do not absorb into the blood. Okay. Then chylomicron. So chylomicrons are the protein coated fat globules. Okay. काइलोमाइक्रोन एक फैट ग्लोब्यूल है, कोई फैट ग्लोब्यूल जिसमें प्रोटीन का कोट लगा है, ओके। सो काइलोमाइक्रोन्स आर द प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल व्हिच ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल और लेक्टियल, ओके। देन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन एब्जॉर्ब सब्सटेंस finally reach to the tissue, okay, and utilized by them and utilized by them for their activity. It is known as assimilation, okay. So absorbed substance finally reach to the tissue and utilized by them for their activity. It is known as assimilation. Then inflammation of the intestinal tract is most common ailment due to bacterial and viral infection. ये important point है. Inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial and viral infection. Then parasites of the intestine. Parasite क्या है intestine में? Tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, and pinworm. Okay. Then jaundice. Jaundice due to deposition of the bile pigment. Bile pigment क्या कहता है? Bilirubin and biliverdin. So jaundice is due to the deposition of the bile pigment, bilirubin and biliverdin. And then diarrhea. Diarrhea के केस में क्या होता है? Diarrhea के केस में increase the liquidity of the fecal discharge and reduce the absorption of the food. Okay, increase the liquidity and reduce the absorption of the food. And then constipation. Constipation क्या है? Irregularity in the bowel movement. Okay, irregularity in the bowel movement. So finish. ये था अपना NCERT का सारा पॉइंट फ्रॉम द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ओके। अगर ये सब आप कर लेते हो तो आपको पूरा NCERT कवर्ड है, ओके। एंड देन इससे बाहर क्वेश्चन आने का लाइक यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक and thank you for watching.